हेलो। Hello students, welcome back to a lecture in biology. So let's start. आज स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। ओके, कितने लोग लाइव हैं? हाय भेजिए मैसेज में। Alright, without wasting any time, we'll start with photosynthesis. Photosynthesis is one of the most important topics जो आपको 11th में से आ सकता है बेटा नीट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो कुछ ऐसे टॉपिक्स की भी हम बात करते रहेंगे बीच बीच में हम क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि why is Avya Academy different than all the other academies that you okay. So firstly, let's start with the first question. Which of the following statements is true about Rubisco? तो पहले मैं आपको बता दूं what exactly is Rubisco. Rubisco is ribulose bisphosphate. Okay, this ribulose bisphosphate. Sorry. This is a very important enzyme. This enzyme is important. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ऐड करने के लिए जो काम आता है, ये मेरा वो एंजाइम है, राइट? तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज माय एंजाइम। अब इसमें क्या क्या ट्रू है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता देती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज फोटोसिंथेसिस? CO2 plus H2O in the presence of sunlight gives me C6H12O6 plus 6O2 is given out. Now this is photosynthesis, right? अब इसमें जो मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, ये रोल इनिशियली लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। मेरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, एज लाइट एंड डार्क रिएक्शन। सो मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है ये डार्क रिएक्शन में है। What is dark reaction? Dark reaction is the one which does not use sunlight. It does not mean कि sunlight के presence में वो हो नहीं सकता है। तो ये एक misconception हमें दूर रखना है, ठीक है? So it is only active in the dark, ऐसा गलत है। This is not true. It is the enzyme involved in photolysis of water. No, photolysis of water is a thing of light reaction. राइट? तो ये चीज में अपने एंजाइम का कोई यूज नहीं है। देन यू हैव इट एज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज रॉन्ग। इट इज द अदर वे। इट हैज हायर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। Okay, and last is it catalyzes the carboxylation of RUBP, which is correct. Why? हमारा जो RUBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट,
इज माई 5 कार्बन मॉलिक्यूल, इसके साथ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 1 कार्बन को ऐड करना है, तो ये पूरी चीज कौन करने देता है मुझे? रूबिस को। इसीलिए उस पर से उसका नाम है, RUBP पर से ही उसका नाम है, राइट? सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। बहुत टेक्निकल चैप्टर है, तो अपन उसके एंड तक जाएंगे, बट हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। Is my voice clear now? Please just mention. Is this voice clear now? Right. Let's go ahead. So here we have a match the column. ये match the column वैसे बहुत famous है नीट में आने के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो है, इसका अब्जॉर्प्शन पीक क्या है, इसका कौन सा कलर होता है जो हमें मिलता है? तो क्लोरोफिल ए में हमें यूजुअली ब्लू ग्रीन कलर मिलता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इट इज माय मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो इट इज ब्लू ग्रीन। ए में ऑप्शन 3 मेरे पास 1 एंड 2 है। मैंने आपको बताया है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से चलना है, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम। तो मैं बी ऑप्शन देखूंगी, मेरे बी ऑप्शन में 2 ही है, 4 या तो 1, तो मैं उन दोनों को चेक कर लूंगी तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो क्लोरोफिल बी में आइदर इट इज येलो ग्रीन और येलो एंड ऑरेंज, so the answer is yellow green, that is 1. so my option is option D, right? so इससे क्या हो जाता है, मेरा जो टाइम वेस्ट होने वाला था ऑप्शन सी डी पढ़ने में, वो नहीं होगा। लेट्स गो अहेड। नाउ ये फिगर में हमें स्टेजेस आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत ही फेमस साइकिल है ये, कैन यू आइडेंटिफाई दिस? दिस इज माय C3 साइकिल, है ना, केल्विन साइकिल है ये। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, ध्यान देंगे हम, ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है माय केल्विन साइकिल। इट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट RUBP। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इट आस्क्ड अबाउट दिस सेम थिंग, ओके। नाउ now what is going to happen? firstly RUBP के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, राइट? सो RUBP क्या है? इट इज अ 5 कार्बन स्ट्रक्चर। इसके साथ आप एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हो, दैट इज 1 कार्बन ऐड कर रहे हो, मुझे 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है, जो इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में। अब 6 कार्बन की चीज 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, तो इट इज 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो वो यहाँ पे होता है, इस पूरे पार्ट में ये चीज होती है। सो स्टेप ए इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। व्हाई इज इट कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन? बिकॉज यू आर एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोक्सिलेशन। सो मेरा ऑप्शन ड्रॉप डाउन हो गया ए एंड सी में। नेक्स्ट, सेकेंड इज रीजनरेशन और रिडक्शन, इन दोनों में से मुझे चूज करना है, सो आई विल गो अहेड। अब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे हम करते हैं रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ ATP and NADPH2 that I received from my light reaction. So यहाँ पे होता है रिडक्शन, so my option C is correct, whereas this part is for regeneration. Okay, so I hope you know how it goes ahead. This is a very nice question. Keep in mind. Which of the following products diffuses out of the chloroplast during photosynthesis? Very nice question. Let's start writing the reaction for photosynthesis. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 is given out. By now आपको ये by heart होना चाहिए। Now इसमें से जो भी बन रहा है और टूट रहा है, that is जो भी मेटाबोलाइज हो रहा है, एक चीज है which is going to diffuse out of my chloroplast because it is a byproduct of photosynthesis. It is not used anywhere. Right, so that is my oxygen which is diffused out of the chloroplast. I hope you are understanding it. Which of the following are required for the light reaction of photosynthesis?
लेट्स सी लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में दो चीजें हो सकती है, या तो साइक्लिक या तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइट, अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो हम पी 700 से स्टार्ट करेंगे और हम वापस वही पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो हम बी 680 से स्टार्ट करेंगे, बी 700 पे जाएंगे, इवेंचुअली मेरे इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी चीज में क्या क्या यूटिलाइज होता है, देखो ऑब्वियस चीज है, लाइट रिएक्शन पूछा है तो लाइट तो यूज होने ही वाली है। राइट, सो लाइट इज नंबर वन थिंग। मुझे तो यहाँ पे आंसर पता है, बट आपको अगर इसमें भी पजल फील हो रहा है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन में ही ई है। अगेन नाउ यू कंपेयर द ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में और कोई कॉमन चीज है तो आई थिंक इट इज सी। तो सी को मैं देखूंगी नहीं क्योंकि पता है कि उसमें से करेक्ट आंसर होगा ही। फिर डी इन दोनों में कॉमन है, ई भी तीनों में कॉमन है, as we saw, and ए इन दोनों में कॉमन है, तो हमें इसको तो अभी आगे स्टडी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, लाइट किसके ऊपर गिरती है? लाइट फॉल्स ऑन माय क्लोरोप्लास्ट एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। So chlorophyll is also very very important. Option D is also my answer, and drop down to two options A and B now. Next is water. Why water? Because फोटोलिसिस होता है इसका, राइट, एंड फोटोलिसिस के बाद ही मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिप्लेनिश हो सकते हैं नॉन साइक्लिक में। तो वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज तो होता है पर वो लाइट रिएक्शन में नहीं, डार्क रिएक्शन में होता है। सो ए विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माय आंसर। एंड ऑक्सीजन जो है ये तो इवॉल्व हो रहा है, मतलब दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, दिस इज नॉट यूज। सो माय ऑप्शन सी डी एंड ई ओनली। राइट, सो दिस इज माय आंसर। Let's go ahead. Now there are two statements. In C3 plants, some oxygen binds to rubisco, hence carbon dioxide fixation is decreased. This is very true. C3 and C4 plants में यही एक difference है कि C3 plants में photo respiration हो जाता है और C4 में वो हो नहीं पाता है। इसका reason कि अगर आपको चाहिए तो आप लिख लीजिएगा कि mesophyll cells of my C4 plant lack rubisco enzyme. Okay, very important. Then statement 2 says that in C4 plants, mesophyll cells show very little photorespiration. But the thing is, यहाँ पे photorespiration होता ही नहीं है. So my statement 1 is true and 2 is false. Okay? So option B is my correct answer. How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in Kelvin cycle? So the answer is 3 and 2. 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH2. Right? So we are going to tick that. ATP हमेशा 3 यूज होते हैं. Which of the following are required for dark reaction of photosynthesis? पहले ऐसा लग रहा होगा कि सिमिलर क्वेश्चन है, राइट, लेकिन एक और बार कभी कभी चेक करना, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो डिफरेंट हो। डार्क रिएक्शन में ऑब्वियसली हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज करते हैं, और तो और उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज होता है, राइट। सो ये सारी चीजें, क्लोरोफिल यूज नहीं होगा बिकॉज क्लोरोफिल वहां नहीं होता है, क्लोरोफिल is present in my thylakoids, or light reaction happens in the thylakoids, dark reaction happens in the stroma. So I have C, D and E only over here as well. Remember that. Going to the next one. Out of the following statements is incorrect. Both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic. This is a correct statement.
Grana lamellae have both PS1 and PS2. This is an incorrect statement. Then stroma lamellae lack PS2 and NADP reductase. No. And cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. This is an incorrect statement. Why? Because cyclic photophosphorylation involves only PS1, that is P700, right? How many times decarboxylation occurs during each TCA cycle? Now, this is a nice question. Okay, इसमें क्या होता है? इफ यू रिमेम्बर, हम स्टार्ट करते हैं, आपको इसका एक्रोनिम पता है? ऑफिसर कैन आई किल समवन, स्पेशल फॉर्मल। वेरी नाइस एक्रोनिम टू रिमेम्बर। ओके, तो इसमें कैसे है? इसमें हम स्टार्ट करते हैं सिट्रिक एसिड से। सिट्रिक एसिड से हम जाने वाले हैं किस पे? आइसोसिट्रेट। फिर उससे हम जाने वाले हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उससे हम जाने वाले हैं सक्सिनेट। तो इन शॉर्ट हम 6 कार्बन से चले गए 5 कार्बन पे, उससे हम चले गए 4 कार्बन पे। 6 to 5 जाने के लिए 1 डीकार्बोक्सिलेशन, 5 to 4 जाने के लिए सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन हैपेंस ट्वाइस। तो मैम हम साइकिल आगे क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि 4 कार्बन पे साइकिल कांस्टेंट हो जाती है। फिर हम ऑक्सैलो एसीटेट तक ले जाए तो भी साइकिल में 4 कार्बन ही रहते हैं। मैलेट तक ले जाए तो भी साइकिल में 4 कार्बन ही रहते हैं। So the amount of decarboxylation is only twice. Okay, let's go ahead. Rubisco is the most abundant enzyme in the world. Yes. Photorespiration does not occur in C4 plants. Why? Because हमारा जो enzyme Rubisco है, it is not present in the mesophyll of my C4 plant. So both statements are correct. Right? Sorry. क्लोरोफिल ए का अगेन ब्लू ग्रीन पिगमेंट मैंने जैसे कहा था, इफ यू रिमेम्बर। तो ए का ऑप्शन 3 मेरे पास 2 है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। बी का ऑप्शन 2 एंड डी का ऑप्शन 1 ओवर हियर। डी ऑप्शन 2 एंड 1। chlorophyll B is yellow green, and so my answer is C, option C, right? Which of the following combinations is required for chemiosmosis? आपको chemiosmosis hypothesis पता है? chemiosmosis hypothesis में क्या होता है? उसमें मेरे पास जो thylakoid का membrane है, lumen है, उसके बाहर से अंदर, मतलब स्ट्रोमा के बाहर से अंदर जाने वाले सारे H+ आयन्स क्या करते हैं? एसिडिटी बढ़ा देते हैं। तो अंदर मेरा pH will decrease, right? Acidity will increase. इसके वजह से मुझे उस एसिडिटी को कम करना है, तो मैं H+ आयंस को फोर्सफुली बाहर भेजूंगी थ्रू द ओपनिंग, मतलब थ्रू दैट डोर। एंड दैट इज व्हाई व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मेरे पास एटीपी सिंथेस की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इन सब की रिक्वायरमेंट है। एनएडीपी सिंथेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, and ATP synthase, but NADP synthase is not useful over here. So as such, we'll keep it as option B. The reaction center in PS2 has absorption maxima of. Again, the most important thing for my students is to remember and memorize this. PS2 का absorption maxima is 680 nanometer and that of PS1 is 700 nanometer. Right? Easy question था काफी. Right? How many ATP and NADP are required for the one molecule of glucose? See, something to be spoken about over here. देखो, हमने अभी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया जिसमें हमने बात करी थी कि for 1 carbon dioxide we require 3 ATP and 2 NADPH. So therefore, for glucose
ठीक है, कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन है। सो हाउ मच? आपको इंटू 6 करना है टोटल, दैट इज 18 एटीपी एंड टोटल 12 NADPH होंगे, राइट? सो 18 ATP एंड 12 NADP, सॉरी 12 NADPH2 होंगे, right? Very easy for us to remember. Please, is my voice clear now? Hello? अब वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो? अब वॉइस क्लियर आ रही है? Fine, let's begin ahead. Now we have to identify the correct statements regarding chemiosmotic hypothesis. Chemiosmosis hypothesis क्या है? मैंने बात करी थी आपके साथ. That is हमारा जो thylakoid का membrane है उसको स्टडी करते हैं. अगर आपको याद नहीं है तो let's study about that. ये जो है हमारा stomatal grana है, ठीक है? This is one single thylakoid, उसके membrane और ये उसका lumen है. दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी हम फोटोसिंथेसिस में देखते केमी ऑस्मोसिस हो रहा है उसको स्टडी करेंगे. सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. प्रोटॉन्स accumulate within the lumen of the thylakoids. Primary acceptor of electron transfers the electron to an electron carrier. This is correct. Protons accumulate within the lumen. This is also correct. क्या होता है? बाहर से सारे प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे. इससे क्या होगा? एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? तो हमें ऑप्शन बी और सी तो करेक्ट है. देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में बी और सी है. हमारे पास दो ऑप्शंस है और उसमें उनके साथ कॉम्बिनेशन में डी या तो ई है. डी देख लेते हैं. NADP reductase is located on the stroma side of the membrane. Protons increase in number in stroma. Stroma में protons will not increase in number. So my option C is correct. Okay. When one carbon dioxide molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? Very nice question. ये कोई difficult question नहीं है. It is just for making you complicate your stuff. एक मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है, ठीक है, इनटू ट्रायोस फॉस्फेट. फोटोकेमिकली कौन सी चीज बनती है? फोटोकेमिकली मतलब लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट यूज्ड इन द रिडक्शन फेज. तो रिडक्शन फेज में कौन कौन यूज होता है? तो एटीपी और NADPH2 यूज होते हैं, ठीक है. पर कितने एटीपी और कितने NADPH2? तो यहाँ पे हमें देखना है. द अमाउंट ऑफ एटीपी यूज्ड आर 2. तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है? दो एटीपी 1 NADPH2, 2 ATP 2 NADPH2. माय ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 2 ATP 2 NADPH2. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? अब C4 plants में जो anatomy होती है मेरे plants की वो बेटा बहुत अलग होती है. इसमें vascular bundles के आसपास जो bundle sheath cells है
ये क्रान्स एनाटमी है. व्हाट इज इट कॉल्ड? KRANZ. Kran's anatomy seen only in C4 plants. Okay. So, bundle sheath cells to increase the number of chloroplasts for operation, to protect the vascular tissues from high light intensity. This is correct. To enable the plant to tolerate high temperature, to provide the site of photorespiratory pathway. No, photorespiration तो यहाँ होगा ही नहीं. ठीक है. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल. वैसे यस, केल्विन साइकिल डज टेक प्लेस हियर, सो दैट विल गिव इट. बट उसका काम ये नहीं है. उसका काम है कि भाई वैस्कुलर टिश्यूज की हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाए. क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देना है ना. Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? What is not true लिखा है, आप याद रखना. ठीक है. So breakdown of electron gradient, reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane. Then you have movement of protons across the membrane to stroma. ये तो correct है. ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो यहाँ पे करेक्ट क्या नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता है. राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. Then statement 1, the primary carbon dioxide acceptor in C4 plants is PEPA, PEPA, phosphonol pyruvic acid, right? So, and is found in the mesophyll cells. Now this is correct. No, this is not correct. Why? Because the primary carbon dioxide acceptor is PEPA. The second statement, mesophyll cells and C4 plants lack Rubisco enzymes. This is absolutely correct. इसलिए तो photo respiration नहीं होता है. So statement 2 and 1, both of them are correct. फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा 4 कार्बन स्ट्रक्चर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. बोथ आर करेक्ट. Which of the following statement is incorrect? Both are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. This is correct. This is correct. This is incorrect. ये question repeat हुआ है. Please remember. ठीक है. Any doubts as such? Do let me know. First table product of carbon dioxide fixation in sorghum. Sorghum is my C4 plant, so it is going to be oxaloacetic acid. Which of the following is incorrect? Rubisco is a bifunctional enzyme. This is the correct statement. But why? I'll tell you. What is the bifunction? इसका नाम क्या है? Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase का डुअल फंक्शन क्या है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो इट विल ऐड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज. तो ये उसका डुअल फंक्शन हो गया. The substrate molecule for Rubisco activity is a 5 carbon compound. Correct. It is RUBP. Then in C4 plants, site for Rubisco activities, mesophyll is incorrect because it doesn't exist. Right? So that's my answer. During non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center at PS2, what is the source which replaces it? It is water. Water replaces these electrons. ठीक है? In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from. So plastoquinone is PQ. It is one of my electron acceptors, right? So it is going to send from PS2 से लेके PS1. No, cytochrome B6F से complex PS1.
Oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of. Now इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है देखो, अगर मेरा रूबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है तो बनेगा 6 कार्बन कंपाउंड जो नॉर्मल केसेस में है. इफ इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन तो 5 कार्बन का 5 कार्बन ही रहेगा. 5 कार्बन को दो पार्ट में कैसे ब्रेक करूं, 3 कार्बन एंड 2 carbon. So one molecule of 3 carbon, one molecule of 2 carbon compound. Correct है कि नहीं? Please check. Do you have any doubts? Just let me know. All right, let's go ahead. One scientist cultured Cladophora in a suspension of Azotobacter and emulated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of. See, Cladophora is my plant. ओके सो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए वो एक जगह पे जाएंगे जिधर फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन बना होगा, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट. In Hatch-Slack pathway, what is Hatch-Slack pathway also called? My C4 pathway. ठीक है, primary carbon dioxide acceptor is phosphoenol pyruvate, PEPA, PEPA. Okay. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? Light reaction से मुझे NADPH मिलता है, ATP मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपने आप में इतने कंफ्यूजिंग चैप्टर्स हैं, कैसे याद रखेंगे कि किसमें NADPH यूज करना है किसमें नहीं? तो मैं आज आपको बहुत सिंपल हैक बताती हूँ. NADPH और NADH में सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क है, P. This is going to sound nonsense, but this is very important. P for photosynthesis आप याद रखिए. Always when you use photosynthesis, you will talk about NADPH and not NADH. Okay, this hack will be useful for a very long time and all the time. So keep this in your mind. Okay, go ahead. With reference to, okay, forgot the answer though. So हमारा आंसर क्या है? Not a product, right? तो हमारा आंसर NADH है. With reference to the factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? Voice. Voice. Fine. So which of the statement is not correct amongst this? So let's see the first one. Light saturation for carbon dioxide fixation occurs at 10% of full sunlight. This is the correct statement. C3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis, where C4 have a much lower temperature optimum. So this is also correct. Increasing atmosphere concentration up to 0.5% can enhance carbon dioxide fixation. This is also correct. Tomato is a greenhouse crop that can be grown in carbon dioxide enriched atmosphere for a higher yield. Yes, this is correct, but वो carbon dioxide enriched बहुत ज़्यादा होगा तो it harm the crop. Option D. Phosphoenol pyruvate is the primary carbon dioxide acceptor in, obviously, my C4 plant. The process which makes a major difference between C3 and C4, it is invariably photorespiration. So keep this in your mind. It is photorespiration.
Phytochrome is a protein that is going to help your plant to form, or maybe to transfer electrons for photosynthesis. So it is my glycoprotein. A plant in your garden avoids photorespiratory losses. मतलब photorespiration से जो loss होने वाला है वो use नहीं कर रहा है. Has improved water use efficiency, shows higher rates of photosynthesis at higher temperatures, and has improved efficiency for nitrogen utilization. Which of the following physiological groups would you assign it to? It avoids photorespiratory losses. से ही मुझे पता चल जाता है कि ये C4 plant है guys. So it is option B. Emerson's enhancement effect and red drop have been instrumental in discovery of photophosphorylation and non-cyclic electron transport. Photophosphorylation, cyclic electron transport, two photosystems operating simultaneously, oxidative phosphorylation. So here my answer is two photosystems operating simultaneously. In photosynthesis, the light dependent reaction takes place in. So let's study the diagram over here. Very, very important. This is my chloroplast. Okay. क्लोरोप्लास्ट में एक जगह पे हम स्टैक्स ऑफ ग्राना दिखा देते हैं. ग्राना. Okay, this is my lamellate. So here what is going to happen? यहाँ पे मेरा लाइट रिएक्शन होता है और यहाँ पे डार्क रिएक्शन, right? So the light independent reactions, which means dark reaction कहाँ हो रहा है? What is this? This is my stroma. ये होता है stromal matrix में. Option C is my correct answer. बंडल शीट सेल्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी करने के लिए. लेट्स सी ओवर हियर, दिस and this is the setup for my C4 plants. C4 plants में ऊपर हम हमेशा मीसोफिल को रखते हैं और बंडल शीट को नीचे. Now over here what is going to happen? मीसोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा. प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर माय कार्बन डाइऑक्साइड है मेरा पेपा. ठीक है, पेपा इज 3 कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ये बनाएंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन. ओके, मीसोफिल में ही बनेगा. फिर बनेगा मैलिक एसिड. अगेन दिस इज 4 कार्बन. मैलिक एसिड के फॉर्म में प्लाज्मोडेस्माटा से मैलिक एसिड will go into my bundle sheet cell. Again writing malic acid over here which is 4 carbon. Malic acid which is 4 carbon will be broken into two parts. Number 1 is कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन निकल गया, दूसरा 3 कार्बन बनके यहाँ पे निकल जाएगा मेरा दूसरा एसिड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है it will then enter my C3 cycle. Why? Because my bundle sheet cells have Rubisco. Yes, now the C3 will go back as PEPA in my mesophyll cell. One thing you're supposed to remember, मेरे बंडल शीट में रूबिस्को है और यहाँ पे मेरे पास कौन है? रूबिस्को नहीं है ना? So there is no Rubisco in my mesophyll cell. Remember that. Okay. Now bundle sheet cells कैसे है? Are rich in PEPA carboxylase. यहाँ पे PEP carboxylase है. PEP को कहते हैं इसको. Right? So they are rich in PEP carboxylase is wrong. Rich in both Rubisco and PEP wrong. Lack Rubisco wrong. Are rich in Rubisco? Yes. राइट, बंडल शीट आर रिच इन रूबिस्को. ये मेरी C4 साइकिल है
Please give a heads up in the comments if you know. Let's start ahead. Correct sequence of cell organelles during photorespiration. कहाँ कहाँ जा जाके आता है मेरा सेल में फोटो रेस्पिरेशन के दौरान. So you have chloroplast, then you have mitochondria, and you have peroxisome. This is an extra portion. नहीं दिया है ये पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में, तो ये तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा चीज आ सकती है, राइट? तो आप याद रखिए, इसको हमेशा स्टडी करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 वापस हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है. रिपीटेशन से आपको समझना है कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करूँ, राइट? गो अहेड. In Cran's anatomy, the bundle sheet cells have thin walls in many spaces and no chloroplast. Thin walls, intracellular spaces, several chloroplasts. Thick walls, no intracellular spaces, large number of chloroplasts, many intracellular spaces. मुझे intracellular spaces नहीं चाहिए, वो वहाँ पे नहीं है. Why? Because there is no room for anything to come and help me for photorespiration. That is very important here. C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 due to that is because presence of large number of chloroplasts in leaf, higher leaf area, presence of thin cuticle, lower rate of photorespiration. Invariably is the answer. Cran's anatomy is one of the characteristics of leaves of. So इसमें मेरा answer is wheat. Jawar, wheat, all of them have Cran's anatomy. Read the following 4 statements and select the right option having both the correct statements. Z scheme of reaction takes place in presence of PS1 only, नहीं, PS1 plus PS2. तो ये तो wrong है. So option A वाले wrong हो गए, right? दूसरे तीनों में कोई अगर कॉमन ऑप्शन है तो स्टडी नहीं करेंगे, पर ऐसा कोई कॉमन है नहीं अनफॉर्चुनेटली, so we will study. Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation is correct. So option B is correct. So these two options, this goes out of hand. Cyclic photophosphorylation results in synthesis of ATP and NADPH2. No, NADPH2 form nahi hota hai. I'm not reading option D because it is already correct. Option A is my answer. Okay. Stroma in the chloroplast of higher plants contains. Higher plants की स्ट्रोमा में क्या होते हैं? Light independent reaction enzymes. Oxygenic photosynthesis occurs in. Okay, oxygenal photosynthesis मतलब जो ऑक्सीजन यूज करता है is chlorobium. Stroma in the chloroplast of higher plants contain again light independent reaction enzymes. This is again a repeat. तो आपको पता है कितना important होगा ये question. Okay.
In leaves of C4 plants, malic acid synthesis during C2 fixation occurs in. ये होता है bundle sheath में. If we go back for this, हम हमारे डायग्राम में वापस पीछे देखें एक बार, तो आप चेक करो यहाँ पे मैलिक एसिड किस में फॉर्म होता है, मीसोफिल में ही फॉर्म हो जाता है वो. तो हमारा आंसर क्या है, मीसोफिल से. Okay, that's my answer. Next one, electrons from excited chlorophyll molecule of photosystem 2 are accepted first by. So chlorophyll 2 में से जब निकल गया है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 से जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट में है, तो वहां से who's the primary electron acceptor? It is my ferredoxin. Okay, remember that. Then C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 because they generate carbon dioxide generated during photorespiration is trapped and recycled through PEP carboxylase. No, um, the carbon dioxide compensation point is more. The carbon dioxide efflux is not prevented. They have more chloroplast and is generated during photorespiration is trapped. Actually, photorespiration hota hi nahi, so this option is incorrect. All right, and compensation point is more. We can go for this one because compensate हो जाता है वहां पे oxygen use होता है. So option A. Electrons from excited chlorophyll molecule of photosystem 2 are accepted first by, as I already mentioned, this ferredoxin. Repeated hai. Okay. Leaves of C4 plants, malic acid synthesis during C2 occurs in. This is mesophyll. Again, repeated. I did not cancel the repeated ones because it helps you understand the importance of that question. The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is formed because there is change in permeability. Okay, ADP is pumped out of the matrix, high energy bonds are formed, proton gradient forms. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेरा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, यहाँ से बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए, अब मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा इसके थ्रू. सो यहाँ पे इसके साथ साथ एटीपी भी बनता है. सो एटीपी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ protons being pumped from inside, that is from the lumen of my thylakoid to the outside, that is in the stroma. बट इस चीज को अकम्पनी करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी बनाता है एटीपी. The C4 plants are photosynthetically more efficient. Oh my god, it's the third time. Okay, the generated compensation point is more. That's what we can go for. The wavelength of light absorbed by PT from a phytochrome is C. It's a very nice question. यहाँ पे बताया नहीं है PS1 है या 2 है, तो हम तो सेफ ही खेलेंगे. 680 नैनोमीटर मिनिमम वेवलेंथ है ये. In the leaves of C4 plants, malic acid formation occurs in the cells of my mesophyll cells. Again, repeated hai ye. Okay. So, beta this is the last question of photosynthesis, right? हमने सारे important questions देख लिए हैं. हमने वो भी देखे हैं जिसमें डाउट्स हो सकता है या फिर वैसे क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो भी हमने चेक किए हैं. सो डू मेंशन इन द कमेंट्स और व्हेनेवर यू फील लाइक कि अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेना चाहिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.